کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں سلام۔ آپ یقیناً اب بھی حیران ہوں گے کہ یہ کاروان سرائے کا جو بوڑھا داستان گو ہے یہ کہاں کہاں پہنچ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی مرتبہ ڈیلف کے بلو شہر میں آپ کو لے گیا تھا، ہم نے کاروان سرائے کی محفل وہاں سجائی تھی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ جمی نیلسن جیسا فوٹوگرافر آپ کو، اب میں کہاں تک یقین دلاؤں کہ کم از کم میری جو مختصر زندگی ہے میں نے اس سے بہتر فوٹوگرافس نہیں دیکھی۔ ہم ان کے اسٹوڈیوز میں اور ان کے اسٹوڈیوز کی والز کے اوپر جو تصویریں لگی ہوئی ہیں ان میں سے بہت سی جگہوں پہ میں بھی گیا ہوں، لیکن یہ کوئی اور دنیا ہے، یہ جمی نیلسن کی دنیا ہے، اینڈ اٹس امیزنگ۔ اینڈ ابھی گفتگو کرتے ہوئے میں اسے کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک ایک تصویر ایسی ہے جس کے اوپر پورا پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو گوروں کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنے کریٹو کس طرح ہو جاتے ہیں اور اتنی مشقت کس طرح کرتے ہیں۔ ان شارٹ، جمی نیلسن بیسیکلی برٹش ہے، ہی واز بورن ان برٹن، لیکن شہریت ان کی ہالینڈ کی ہے۔ بچپن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور وہ بھی ویگب بانڈ تھے، مطلب یہ اٹ کمز انٹو دی جینز، وہ بھی ہمارا گھر شخص تھے، تو ان کے ساتھ شیل میں وہ جیولوجسٹ تھے، تو موصوف نے پورا بچپن وہ افریقہ کے جنگلوں میں اور ایشیا وغیرہ میں گزارا۔ پھر اس کے بعد یہ یہاں پہ انگلینڈ میں تو بہت اچھا بورڈنگ اسکول تھا، وہاں ان کے والد صاحب نے ان کو داخل کرا دیا۔ بڑی زبردست فیملی ہے، بیک گراؤنڈ بھی، میں نے ان کی گرینڈ مدر کی تصویریں دیکھی ہیں، گرینڈ مدر کی تصویریں دیکھی ہیں، مطلب ٹپیکل وکٹورین سٹائل، رائلٹی سٹائل خواتین ہیں، اور ان کے والد صاحب کی بھی۔ چنانچہ ان کو بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی روح میں وہ بے چینی تھی جو ان کو شاید جینز میں ہی ملی تھی۔ 17 سال کی عمر میں موصوف وہاں سے فرار ہو گئے بورڈنگ اسکول سے۔ اچھا، فرار سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کسی خاتون کے ساتھ فرار ہو گئے، بلکہ وہی جو حص ہوتی ہے آوارگی کی، اس کی وجہ سے نکلے۔ اور فرار کہاں ہوئے؟ کوئی ٹمبکٹو نہیں گئے، کوئی ایمیزون کے جنگلوں میں نہیں گئے، تبت گئے۔ He was 17 at that time, 17, 18، جب یہ تبت پہنچ گئے اور وہاں پہ 2 برس وہاں پہ انہوں نے گزارے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے 2 برس کس طرح گزارے ان زمانوں میں، کیونکہ تبت جو ہے اب تو آپ آسانی سے جا سکتے ہیں، بلکہ میں آلموسٹ تبت چلا گیا تھا، ہم نے بکنگ بھی کروا لی تھی، لیکن ان زمانوں میں بہت کم لوگ تبت جاتے تھے۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ فلم بھی بنی تھی 7 years in تبت، اور اس طرح تبت کے بارے میں بہت کم معلومات تھی۔ تو یہ وہاں فوٹوگرافی کرتے رہے، اور یہ ان کا شوق تھا، لیکن بنیادی طور پہ آوارہ گرد تھے۔ اور واپسی پہ آ کے انہوں نے جو فوٹوگرافس یہاں ڈسپلے کی تو وہاں پہ ان کی اتنی ایڈمریشن ہوئی کہ نیشنل جیوگرافک نے ٹائٹل پہ ان کی تصویر چھاپی، ان کی پہلی تصویر نیشنل جیوگرافک نے چھاپی۔ اچھا، یہاں پہ یہ ایگزیبیشنز کرتے رہتے ہیں، شوز کرتے رہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا، یہ میں نے تو بہت مطلب ان سے گزارشیں بھی کی، لیکن ہی واز ویری کائنڈ انف ٹو گیو ہز ٹائم۔ ان کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، اینڈ ہمارے ہاں تو ہر دوسرے شخص کو کہتے ہیں نا کہ یہ بین الاقوامی شہرت یافتہ شخص ہے، اور مطلب اگلا نیبر نہیں جانتا ان کو۔ لیکن جمی نیلسن ایک ایسا شخص جس کو میں کہہ سکتا ہوں پورے تیقن کے ساتھ کہ یہ انٹرنیشنل فیم کا شخص ہے۔ کوئی بھی شخص جو فوٹوگرافی میں انٹرسٹڈ ہو وہ ان کے نام سے بہت واقف ہوگا، شاید ان کو ایڈمائر کرتا ہو، شاید ان کو کرٹیسائز کرتا ہو، کیونکہ یہ دونوں طبقے ہیں۔ جمی نیلسن جو ہے، جس طرح بڑے ہوتے ہیں ادیب ہوتے ہیں، مطلب ٹالسٹائی کے اوپر بھی تو لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں، تو وہ مطلب ہے کہ اپنا اپنا ایک کریٹو پہلو ہوتا ہے ہر شخص کا، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس کریٹو پہلو کے برابر میں نہیں آتا یا اگری نہیں کرتا تو وہ اسے ڈفر کر سکتے ہیں۔ جمی نیلسن کے اوپر جو سب سے بڑا الزام ہے کہ یہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ فوٹوگرافی کیا ہے؟
फोटोग्राफी ये है कि किसी मोमेंट को कैप्चर करना और वो बिल्कुल कुदरती लगे। इनका जो फिलॉसफी है ऑफ फोटोग्राफी जिमी नेल्सन की, वो टोटली छोड़ा। वो कहते हैं कि मैं कोई डॉक्यूमेंट्रियां बनाने वाला नहीं हूं कि मैं कवरेज करूं, जिस तरह जूं का तू है उसको कवरेज करूं। मैं क्रिएट करता हूं उनके अंदर जो शानदारी है, जो रॉयल्टी है, वो जो ट्राइब्स मसलन है, उनकी हजारों साल की जो जिंदगी है उसको मैं डिपिक्ट करता हूं और उसके लिए मैं उनकी मॉडलिंग भी करता हूं। क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि सुबह 6 बजे फलां आबशार के नीचे कोई ट्राइबल बंदा जो है वो स्नान कर रहा होगा, उसको वहां ले जाना पड़ता है क्योंकि उसके बुजुर्ग वहां जाया करते थे। इसी तरह इन्होंने मतलब मंगोलिया की मैंने तस्वीरें देखी, मुझे तो मतलब लगता है कि जैसे पेंटिंग है, दे आर नॉट रियल फोटोग्राफ्स। और एक नहीं है, इस स्टूडियो में सैकड़ों के हिसाब से। चुनाचे मैं बहुत समझता हूँ कि भाई मैं खुशकिस्मत हूँ कि जिमी नेल्सन ने मुझे इतना टाइम दिया। और बुनियादी तौर पे मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए भी हुआ कि मसूद जो है, मैं 91 में K2 गया था, और ये मेरा ख्याल 88 में वहाँ से हुआ है। KT थे, पता नहीं कैसे चले गए, उनसे पूछेंगे बाद में। अच्छा, इसी तरह पिछले बरस भी पाकिस्तान गए थे। अब इनका फ्यूचर जो है पाकिस्तान के हवाले से बहुत सा काम इन्होंने करना है, वो इन्होंने प्लान कर रखा है, लेकिन वो हम उनके अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये हमें चाय पिला रहे हैं, ये वाली। सो जिमी, व्हाट डू यू पुट इन दैट टी? Good question. Good beginning. It's more like a soup. It's very healthy. Fresh ginger, ओके। fresh mint, lemon, and honey. सो आप ये जो है ना रेसिपी, ये याद रखें, जिमी की सेहत का राज यही है। इस माशाल्लाह 58 56. 56, Born in 1967. यस। और एक और बात, इनके बाल जो थे व्हेन ही वाज वेरी यंग, तो शायद किसी इंजेक्शन की वजह से या किसी बीमारी की वजह से झड़ गए थे। तो इनका ट्रेडमार्क ये है, जिस तरह ये रहते हैं यूल ब्रेनर की तरह। I don't know from where to start. I mean, I've heard. I was listening to a little bit of English, a little bit of Urdu. Yeah. But begin. Thank you for coming. no, Thank you for listening. It is an honor. And let's say, why did you not visit, but you just got lost in Tibet for 2 years? Why? It's a good question, a very important question, and I'm still analyzing the answer. So it's not finite, it's a work in progress. The simplistic way of answering it, I was very, very, very lost. Lost. But as a person. As a person. And I was trying to find the truth of who I was. मतलब है कि बंदा जो है वो अपने आप को, और हर क्रिएटिव शख्स अपने आप को एक खास स्टेज पे लॉस्ट फील करता है। वो बेरिंग तलाश करता है कि कहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ या कौन सी चीज़ मुझे आसूदगी दे सकती है। तो जिमी ने बड़ी अच्छी बात की कि आई वाज लॉस्ट, और मैं चाहता था कि उसका को मुझे जवाब मिले, और उसके लिए तिब्बत वाज द बेस्ट प्लेस। In hindsight, yes. And maybe I should elaborate the lost. Obviously, as a teenager, I was 17. I had no concept of what lost was. This is in hindsight. This is as we get older, you begin to understand organic, intuitive decisions that are made. Prior to the age of 17, my life had been split into two. It was bipolar existence. Prior to the age of 7, I traveled, as you said, with my geologist father around every continent in the world. From the age of 7 onwards, I lived predominantly in an English boarding school, Catholic Jesuit institution. And these two worlds were very separate. Okay. And there was a big clash. And that's where I was lost. I don't know how deep you want me to go. The strictness of the boarding school, it was more, and the freedom of being a vagabond. It goes further. It goes a lot further and a lot deeper, and I won't divulge too much. Prior to the age of 7, I felt seen and understood and connected with the world and humanity of the world and with myself.
I have in my studio here lots of feathers. This is a metaphor. I think as a child, you're like a feather. You're light, you're aerodynamic. There are thousands of hairs, all beautifully aligned, and you really love that organic form. Lightness. You're a wing. If much the same as Forrest Gump. At the beginning of Forrest Gump, I'm sure some of your listeners will be... we see there's an analogy of a feather, but the feather is a metaphor for the lightness of being a forest. नेल्सन ये कह रहे हैं कि एक खास स्टेज आती है कि जब इंसान अपने आप को एक परिंदे के पर की तरह महसूस कि उसकी अपना एक एग्जिस्टेंस है और वो हवा के ऊपर तैर रहा है, जिस तरह फॉरेस्ट गंप आपने देखी होगी फिल्म, उसके आगाज में भी एक पर तैरता हुआ आता है. And Forrest was told at the beginning by his mother, Forrest, you will be an eternal child. Eternal. Because he had severe autism, but it was a metaphor. Yeah. But she said, if you look at yourself as a feather and care for that feather will bring you as a wing to the lightness of being. Okay. I, to the age of 7, was a feather. We all are as children. You trust, you're open, you love and are loved. Excuse me. After the age of 7, my feather was crushed. I let it be crushed. Okay, so I was a feather, but there was no more aerodynamics. So I landed on the floor. Why were you crushed? How were you crushed? Institutionalized by Catholic priests. Okay. And it was very, very, I apologize, I'll put this over here and slide it out of the picture. I walked very lovingly, naively into an institution of 1,000 little children and 400 Catholic Jesuit priests. And unfortunately, some of the Catholic Jesuit priests had been institutionalized too long behind walls, and they had access to young children, and they did things with young children which are not allowed. Yeah. And so you disconnect, you stop loving yourself, you stop trusting yourself, and you are indoctrinated with guilt. So you escaped to Tibet. What happened? So I had my teenage years very uncomfortable. Okay. I disconnected from myself, my physical self, because of what I've experienced. At the age of 16, I think if you talk about a moment, a calamity, but a positive calamity, I think this is a nice metaphor for life. We often hit brick walls, but sometimes you have to sort of dare to stand up. At the age of 16, 3 things happened at the same time. I was very ill with cerebral malaria, had a high temperature. I was living in the Congo. When one has a temperature, one is vulnerable, one is very emotional. I was very ill. I went back to this institution. They locked me in a room because they thought I was contagious. Really? So you're 16, you get locked in a room. I'm given the wrong antibiotics. Malaria इनको हो गया अफ्रीका में और गलत एंटीबायोटिक दिया तो उन्होंने इनको बिल्कुल कैद कर दिया. एक ये बता रहे हैं कि उनकी बचपन में जो भी कह रहे हैं कि कई मरतबा एक वॉल, एक सॉलिड दीवार सामने आ जाती है आपके और आप उसके क्रॉस नहीं जा सकते. तो 3 ट्रेजेडीज हुई. एक ये कि इनको मलेरिया हो गया और इनके बाल वगैरह और इनको बंद कर दिया गया. द सेकंड ट्रेजेडी, a lot of stress. And third, I woke up a week later with no hair. Oh, yeah. In one night. So just in one night, एक ही रात में कहते हैं कि मेरे बाल जो थे गायब हो गए. So as you can see, now I have no hair, and as my children mock, nobody has any hair when they're in Amsterdam. When they're 56. No, but when you're 16. आजकल तो वैसे ही ये लोगों को बहुत शौक है. बहुत सारे यूरोप में मैंने देखा कि वो बिल्कुल उस तरह फिरवाते हैं टिंडे करके. तो उस लिहाज से जेमी जो है वो लेटेस्ट फैशन है इसका. तो simple story is that prior to the age of 7, I didn't see a difference in people. I didn't see a difference. It didn't matter what color, what race, what language, what culture, what amount of hair. Okay. We were all one. One. I was indoctrinated that no, this is not the case. We are all different. Okay. And then by losing my hair and losing myself and my spirituality, my love for myself, I ended up empathizing with the other who is judged as being different for color, for race, for language, for culture, for hair or no hair. So the journey with the catalyst was, how can I go back and reconnect with the world, reconnect with humanity, rediscover myself, my authentic self, even though I felt
very, very ugly and in pain. And that had to be back in the world where I grew up in, not in the environment, the developed Western world where I was told I was going to be educated in self. Okay. It was back into the indigenous world. The reason for Tibet was, as a child, I had an avatar, an alter ego. Obviously, we didn't have any computers in the 1960s, but my alter ego was Tintin. Really? Tintin. How did you know? I knew all his books, and when कहते कि अवतार जो था वो एक स्पेशल टिंटिन उसका नाम था. हाँ जी. I love Tintin because Tintin was an explorer. Tintin was a traveler. Tintin was an adventurer. Tintin. But did he exist? No. No, he did not. Hervé was the creator. टिंटिन जो है उनका एक ख्याली ट्रैवलर है और एक्सप्लोरर है जिसको ये आइडियलाइज करते थे. Yes. So then, inspired by Tintin, I thought, well, I have to leave this world and re-enter another world, Yes. a world of discovery. But it wasn't so much about the other; it was more myself. एक और दुनिया में वो कहते हैं कि मैं दाखिल होना चाहता था. वो जो थी ना बहुत तासुब की और रिलीजियस फैनेटिसिज्म की दुनिया, और जिसमें मुझे उन्होंने घोंट दिया था और मेरा पर जो था वो भी उसको क्रश कर दिया था. उसको छोड़ के मैं एक और दुनिया में जाना चाहता था. और वो उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए रेस और कलर और मतलब रंग और मजहब और वो जितना डॉगमाज है वो उनके ऊपर बिलीव नहीं करते. दे बिलीव ह्यूमैनिटी इज वन. जी. And Tintin went to Tibet. Okay. And in Tibet, in the books, there were lots of little children living in monasteries with no hair. Oh yes. So I thought maybe I can find humanity that looks like me. जिमी कहते हैं कि मैं तिब्बत इनका जो टिंटिन है हमें तो वो टिंटिन नहीं मिला. हो सकता मिला हो तो हमने पहचाना ना. लेकिन ये कहते हैं कि भाई जब उनका टिंटिन जो है वो उसने तिब्बत का कॉन्सेप्ट दिया तो एक और चीज़ ने मुझे फैसिनेट किया कि वहाँ पे जो राहब खाने थे. आप जानते हैं कि बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स होते हैं वो अपने सर पे उस तरह फिरवाते हैं, टिन करवाते हैं, तो वहाँ वो भी रहते थे. तो इनका कहना यह है कि मेरा वहाँ जाना इसलिए भी था कि वो मेरे जैसे. ओके. And so the journey began. So I ran away. I was 17 in the early 1980s. Obviously very different than today. No internet, no computers, no information, no maps. Where did you get the money from? I stole it. You stole them from my father. Okay. Sorry. Walid Sahab say I borrowed. I paid him back. जब आप वापस कर देते पैसे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ये काम करें. It's a middle truth. A middle truth. I had a little bit of money myself. I'd been working for a few months, and I borrowed his credit card. So, which way did you? Where? I flew to Peking. Okay, Beijing. Beijing. Yeah. Then it was Peking, and I traveled to the province of Xinjiang in the far northwest, right to the border of Pakistan. Okay. To Kashgar. Yeah, on the other side, and then I started walking from Kashgar down along the border of Pakistan into Tibet. कहते हैं कि भाई मैं उस जमाने में ट्रेन तो होती नहीं थी. अब तो आपको जानते हैं कि बीजिंग लासा ट्रेन there was no train. There was no train. तो ये काशगर पहुंचे और काशगर से ये पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचे. और कहते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ चलता चलता हुआ मैं फिर तिब्बत में दाखिल हुआ. हाँ जी. And I dressed as a monk. You dressed as a monk? I dressed as a monk. I made myself very dirty. And I was adopted by some nomad families. एक खानाबदोश फैमिली ने इनको दर्श आया क्योंकि ये बिल्कुल मॉन्क्स की तरह ना राहब की तरह इनकी शक्ल थी. तो उन्होंने इनको लेपालिक बना लिया. And all the families were traveling to a very sacred part of Tibet called Mount Kailash. जिमी मुझे अपने ख्वाब की याद दिला रहे. माउंट कैलाश का इन्होंने तज़किरा किया और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं माउंट कैलाश जाऊं. जैसा कि मैंने कहा कि आई ऑलमोस्ट वेंट टू तिब्बत, और तब हमारे प्रोग्राम में ये भी शामिल था कि हम माउंट कैलाश जाएंगे. इट्स अ फैसिनेटिंग माउंटेन जैन्स के लिए, बुद्धिस्ट के लिए और हिंदूज़ के लिए, क्योंकि हिंदू समझते हैं कि उनका जो बड़ा देवता था वो वहीं पैदा हुआ, शिव. अच्छा, और बुद्धिस्ट का भी यही ख्याल है और ये जाते हैं और उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं. इट्स ए फैसिनेटिंग माउंटेन. उसमें देयर इज सम मिस्ट्री. लोग ऐसे पागल नहीं होते किसी भी पहाड़ के पीछे.
तो वो मैं इसलिए न जा सका क्योंकि मैंने जब देखा कि टेम्परेचर वहाँ पे क्या है, तो टेम्परेचर मैं सहार नहीं सकता था, तो माउंट कैलाश भी गए. सो यू वेंट देयर. What was very important, though, and I was unaware of this, हाँ. was that for 30 years, Tibet had been closed. Oh yes, In the it was. early 1950s, the Chinese had gone into Tibet Okay. and said, this is not Tibet anymore, it belongs to China. Okay. In 1984, it was the first year a few foreigners were allowed to travel to Lhasa, the capital. Right. I didn't know this, so by accident, I walked in the back door of Tibet, the first person for I don't know how many years. But because I was unaware of the complications, because of the naivety, because I was acting a bit like Forrest Gump. Where did Forrest Gump end up in all these institutions? I was trying to fly again. I was trying to feel something human and intuitive. So I didn't think of the consequences. I felt also, and it's very significant for the listeners, that I had nothing to lose because I was so disconnected from myself. It didn't matter what happened to me. I didn't want to die, but I was completely open to a new path. ये उनका कहना यही है कि मैं मतलब मेरे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं था, यानी मैं इतना अंदर से टूट गया था कि मैं ये तो नहीं कि मैं मरना चाहता, लेकिन जब ये मिलते हैं इस ट्राइब को, एक नोमैड ट्राइब है खाना मदोश, और वो जा रहे हैं, they were going to the Mount Kailash. There were, I mean, it's a bit like going to the Hajj in Mecca. Every Tibetan has to visit Mount Kailash once in their life. Yes, वो कहते हैं कि जिस तरह आपका हज है, इसी तरह माउंट कैलाश है तिब्बतियन लोगों को के लिए कि वो अपनी जिंदगी में एक मर्तबा वहाँ जरूर जाते हैं और उसके गिर्द फेरे भी लगाते हैं शायद. So you had the Chinese who were bringing their military into Tibet, tens of thousands, but traveling at the same time, many migrating nomads. So we traveled in between the Chinese convoys and all the Chinese soldiers. Avoiding them, sometimes crossing them, dressed as a... And what was spectacular was because of the naivety and the lack of communication, no language, I didn't speak Tibetan, didn't speak Chinese, I didn't really know where I was going, I was totally vulnerable. But in that vulnerability, I was picked up by a culture, but by a culture who was also suffering. The Tibetans had been at war, defending themselves for 30 years. Prior to the 1950s, there were 660 working monasteries in Tibet. When I arrived, there were 3 left. And the outside world had done nothing. So the Tibetans were being severely suppressed. No, but now there are hundreds of them, what I see in the vlogs. Well, just started to finish with that. So in that suppression, so rather than being angry with me, you abandoned us as a Westerner, they could see I had abandoned myself. So they didn't judge, they didn't hurt. They picked me up and they said, come, you're one of us. It's okay. We will look after you. We will feed you. We will guide you. We will keep you warm. We will hold you. And perhaps we will teach you. ट्राइब था खाना बदोश, उसने कहा कि तुम भी लावारिस हो, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम आ जाओ, हम तुम्हें खाना खिलाएंगे, हम तुम्हें कपड़े देंगे, अपने टेंटों में जगह देंगे, तुम हम जैसे ही हो, हमें शामिल हो जाओ. So perhaps the journey originated there. It was how can you relearn to love yourself? Achha, Jamie, what about, I mean, you spent 2 years there and you took photographs and then you came back. Okay, when I left, my father said, I don't know where you're going. I don't know what you're going to do. Let's, inshallah, hope you come back one day. But the one thing you can take is this old camera. So I've just shown you the camera. Yeah, that was his suggestion. An old Russian Zenit. 4 apertures, 4 shutter speeds. I had no idea. And I just had 4 rolls of Kodacolor gold film, 35 millimeter negative film. Halfway through the journey, I began to feel what I was seeing and experiencing was very special. Very unique. And this is when I began to feel and to dare and to see and to want to record what I was seeing. And the portrait I showed you was the first person I fell in love with. Really? A very beautiful Tibetan lady. She had no idea that you were in love. कहते कि वहाँ पे पहला जो कैमरा मैंने इस्तेमाल किया वो अभी मैंने देखा, इनके वालिद साहब ने दिया था रशियन, वो ले गए थे साथ और उससे ये तस्वीरें वगैरह भी खींचते रहे, पुरानी तरह का कैमरा था और वहाँ पे एक तिब्बतियन दोशीज़ा जो थी उसके ऊपर ये आशिक हो गए ऑब्वियसली
मतलब है कि यंग आदमी होता है तो दोशीज़ा भी खूबसूरत है, मैंने तस्वीर देखी, उसकी इन्होंने तस्वीर दिखाई, उतारी और वो नेशनल ज्योग्राफिक के टाइटल पर गई जी। So I came back 2.5 years later. I developed the films. My father said, you survived. He didn't really ask where I've been or what I've done. He was busy with himself. I processed the films and a few of the pictures were exposed. And I took them to the Geographic and they published them. And this was the beginning of the journey. Okay, that was the beginning. I mean, your journey is so long. I mean, it is a majestic journey. And to be much longer, I hope. Yeah, I'm sure. If I can be 85 with all my irregularities, you are a very regular person.